Oh my bad. All right, boys. Hello, UV, everybody. On your ways, bye. Good evening, everybody. ये ऐप थोड़ी छोटी है बट कुछ और है. रील मस्त थी आज की, है ना? नाज़दाक कैप, लेट्स गो गाइस. नाज़दाक कैप. भाई इनके कॉन्कर नहीं हो पा रहा है. बहुत इनसिक्योर बना दिया है इनके ने. होगा पहले में शुरुआत में इनके बहुत चंचल है भाई. टाइम लगेगा, हो जाएगा बट इतना हार्ड भी कुछ नहीं है. बस बढ़िया बढ़िया. आप सब बताओ. नथिंग, यू डू यूजुअल वर्क. यूवी we got red folder news at 8:30 prelim something. यही है मेन हाइस एंड लोस. यही है जो ओपन हुआ था वही. देखते अगर कुछ मिला तो. ओके अभी तो वही है. पता चल जाएगा ना गाइस. हमें तो इन्वर्जन पे एंट्री लेनी है. ऐसा कुछ हाई लोस भी इतने प्ले आउट नहीं करते. हो जाएगा. Guys, I'm very low on energy today. Just came from some event. So gotta save myself from wasting my energy until trading is done. After we can do whatever. Okay? No, please. This one. Good morning, good morning. Hello Srini. You see this? लाइट भाई नहीं हम ट्राई तो करेंगे पूरा कि गैप ना होना पड़े. तुम लोग भी ट्राई करो जिससे मुझे गायब ना होना पड़े. समझ रहे हो? हेलो आशीष भाई, व्हाट्स अप? ये भाई वो तो भूल ही गया. साइन करना था मुझे. We got 2 minutes till market open guys. 2 minutes.
जितना कोड यूज उतना गैप कम. I mean, there's no line that रेगुलर लाया होना. यस यस आई एम. मैं पिछले 1 महीने से तो आ ही रहा हूँ. होपफुली ये हैबिट ही बन जाए. मगर टेंशन मत लो. Obviously, very good mindset. Yes, okay, of course. Okay. No lies there. It really helps. Yeah. Ravitesh, thank you. You should do that. You should do that, Ravitesh. Bye. Thank you. Yes, yes, we will be doing that. Right? Do not worry. अरे पता नहीं. All right, market is open, guys. Market is open. Ting 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 ting. Quick overview what has happened today. We, I think at mark 18, right? We opened, we dumped something around what, 400 points, and now we are back of 600 points. So that is crazy. So right now we are in the bullish system, and if we do continue to do so, again, it can be fun. Kaching, kaching. Bonnie and giveaway country for the community. Let's go, bhai, AJ bhai. Thank you so much, bhai. Guys, double is in the chat for AJ bhai. AJ bhai bringing energy into the chat. Crazy. Thank you for the 500. AJ भाई का खुद का एक गिव अवे हो जाएगा उनके नाम पे, आई गेस एट वन पॉइंट. नाम रखेंगे एजे भाई का गिव अवे. Ravi Tej Lucid Flex is the best account. Okay. Difference is there is no consistency in funded accounts. There is consistency in the evals when you are buying Lucid Flex, but you will have no restriction in funded accounts. So I would highly suggest that you buy those accounts. Okay. गाइस ये पूरा बुलिश है. अगर मुझे कंटिन्यूएशन में एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है, तो आई एम गोना प्लान ऑन टेकिंग दैट. अकाउंट फ्लिप मतलब मुझे वो लिख ही देना पड़ेगा. एक्सक्लेमेशन मार्क फ्लिप वाला सीन. फ्लिपिंग मीन मिनिमम जो प्रॉफिट रिक्वायर होता है वो बनाना. हेलो जेलियो. हेलो चक चक चक. ईएस ऊपर की साइड जा रहा है गाइस. ईएस पता नहीं मार्केट इतना ये चॉप है नहीं. दिस इज लाइक व्हाट 25 पॉइंट्स रेंज and this is 100 point. Hello noon. Okay guys, if it closes I'm gonna simply long. That's what we gonna do. Okay. We gonna have a good amount of SL. Alright, let's see if it works out. I mean ब्रेक इवन डाल देना पड़ेगा.
कंटिन्यूएशन लॉन्ग्स पे पोजीशन साइज गलत किए तो निकाल दियो और काट लियो, अभी भी प्रॉफिट्स में ही है। ओके, फिर मत रोइयो मत। और ये हाई पे ब्रेक इवन डाल दियो, ये लाल से वाले पे पंप नहीं कर रहा है साला। Come on, take that high out at least. Come on, come on. Okay, guys, break even point, break even point. No risk anymore. Fuck it. I'm gonna trail even my SL to that high. Okay, guys, I got out there. I don't care about RR or anything. I'm just gonna get out at 44 points. Okay, I get what I get. Entered at 38, exited 73. Yes, RR was bad, but we take what we can take. अगर ब्रेक इवन डाल दिया है तो ब्रेक इवन डाल के वेट कर लो 66। ओके, जाता है तो बढ़िया है, चला जाना चाहिए। अगर वापस आएगा तो फिर वहीं ब्रेक इवन मिल जाएगा। यप, ब्रेक इवन डाल देगा तो मैं बच गए, बच गए। बी पॉइंट आई थिंक 1:1 भी नहीं था हमारा, 40 एक 41 पॉइंट्स थे। 41 पॉइंट्स, आई एम ओके विथ टेकिंग 41 पॉइंट्स, इट्स फाइन। आई एम नॉट गोना क्राई अबाउट नॉट टेकिंग 1:1। ओके, I booked 700 and something, entered with 1 mini, sold some balls in this game, and yes, we are up in my one. I have only one funded account that I'm trading in this and hopefully हम ऊपर चले जाए। But again, my exit was at 874 dot 874. Yes, 874 on dot. ऐसे जाए। Probably सपोर्ट करके चला ही जाएगा अगर if you are looking at the trades like this, probably सपोर्ट करके चला ही जाता है वो usually, but no, there is no problem if you scalp in a market open on any accounts. It's alright as long as you are not okay, as long as you are not trading news in some forms, it's alright to do anything. Okay. Hello, 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 hello. And we have our PNL popped. Okay, I'm just gonna place it right here on the stream. It looks alright. What in this? And there goes the 1:1. Break even is curse, I guess, when you are having B or SLs. अब नेक्स्ट पे आउट का कब आएगा?
अगर मंडे या ट्यूसडे सक्सेसफुली फ्लिप होता है देन वेडनेसडे को बाय स्ट्रेटेजी क्या रहती है? टेल मी इन वन लाइन. स्ट्रेटेजी इज liquidity sweep, inversion of low time frame FPGs, and targeting highs, internal highs or internal lows. That is what my strategy is, right? Premium and discount areas, no, I do not count those in the play, but yeah. Is this eval or funded accounts? This is funded accounts. This is funded next ka funded account. I had one eval which I passed in funded next, so I'm just trying to play around, be a good boy, and withdraw some money for my next run on the, because I'm planning to get a run on funded next in few weeks after I get something on the Tradify. Tradify पे पास करके अगर बफर बन गए then after next I'm gonna be funded next. By Lucid का बताओ बफर बनाना पड़ेगा. No, minimum withdrawal is 500, so minimum you have to make is like $1,000. So there is no buffer requirement as per se, but if you look at it other way around, I mean very closely, $1,000 is what you need. Do you trade personal capital? No, I do not trade personal capital right now. What turned you to become a profitable trader? I just experience. Let's just say experience was the biggest thing that helped me out. यही strategy, like every same strategy का काम करती है. ભાઈ 5 days ફ્લિપમાં 150 કરતાં વધારે પ્રોફિટ કરવી તો ચાલે પટેલભાઈ. ઇઝી. મિનિમમ એટલો હોય એટલે એનાથી વધારે હોય તો ચાલે. So if we take 1k USD, we can withdraw all in. No, you cannot withdraw everything. You can. The account says that you can withdraw 50% of your profit. So minimum withdrawal is 500, and that is why 1,000 is needed. My story is also UK came back after 6 months, almost lost a lot money working here, sadly got laid off. I'm trading in Nifty. I say you leave Nifty as soon as possible, but it's alright, it is your decision. Ravi, there's never gonna be one thing which gonna help you out. It's gonna be a series of things. Guys, you know what to do, right? You know what to do. Do I need to spell it out? वेट कर लो बस थोड़ा सा ईयर्स को जाने में, वरना करना है तो कर सकते हो. So there is not one thing that gonna help you a lot, but series of events or maybe a series of things which you need to focus on is like experience, not making same mistakes again and again. So you have been working hard in the already market, so you should not be making so many mistakes that you already made before, right? Guys, this can flip around, okay? Be very careful, this can easily flip around.
Yes, inverted with CISD. Yeah. Yeah, I'm gonna remove the profit wala scene, okay? I know people love to see it. No such thing then better than yours. How to know which one's gonna hit the TP? You never know. It's just about experience. You never gonna know which one's gonna hit your TP, which one's not gonna. That's a long setup, guys. If you are interested, this is like again, stop is again big one. So I would say after taking out this high, you can go break even the long side, but it is on you. The ES did not follow through. Shreyas, if you look at ES is not willing to go down. Everything is there, but ES did not go. Guys, I'm not again not in this trade. Okay, I'm done on that account. I may buy some evals. Let's see if I can do it right now to pass it. Today is Friday, so probably this coffee is the best thing. How often can you take real profits from Lucid? 5 days, I guess. 5 days. If you are in this long, guys, make sure this is what you are targeting, or this is where you are trying to risk off everything, and this high 959. So make sure that you know that. Okay, this inversion got here, right? My bad. What I'm looking at 30 second का इधर हुआ था, but 1 minute का कब का हो चुका था. I don't know. I'm just tired, guys, today. My bad, guys. This got inverted right here, not here. So you should have gotten here. ये वाला ट्रेड छोड़ो, इसको दूर करो. Right. Oh, but we you should be careful and you can go down. We are looking for upside again. So how do we keep our mindset straight, like going short and then long quickly? Because again, you are keeping that thing in mind. No, nah, I need to stick to my bias. I need to do this, blah blah blah. I am just looking for the clues where market is going. I'm fluid like that. That if market is telling me that it's gonna go down, I'm gonna go with it. If it's telling me that it's gonna go up, I'm gonna go with it. I don't care. At this point, I felt like market is going down. In the next two candle, I felt like market is going up. So it's as simple as that. We are just looking for the clues where market is going. I do not give shit about what my bias was at 2 minutes ago. I only care about what my bias is right now. I hope you understand that. Again, if you entered on this, be very careful, guys. After taking out this high, exit मान लेना. But तुम इस inversion के नीचे चिपका के रख सकते हो. 56 पॉइंट का स्टॉप है. एंड अगेन 56 पॉइंट टारगेट करोगे, बट इस हाई के बाद वेरी केयरफुल, बिकॉज अब ये मार्केट स्टॉल कर रहा है. ओके, एंड अगेन
एंट्री वॉज मिस्ड एट दिस पॉइंट क्योंकि इन्वर्जन देखो तो इसका इधर हुआ था, नॉट हियर। नो नो, आई एम जस्ट स्लीपी। ब्लू लाइन्स आर माय ड्रॉन लिक्विडिटीज, हाइस एंड लोज। सीताराम सीताराम प्रतीक। Personal account, I don't know, you can do it from my GJ. Alright. No such thing as a split and predators. Practice करनी IFPG liquidity shift. So how should I approach NQ in other session, or should I just practice New York session first? Everybody should practice New York session first and then look around what they wanna do. Once you master this, you can look around in other timing. Oh, I took a flip shot and got SL. Yeah, that was pretty bad. अगर तुम ES को नहीं देख रहे थे, then it was pretty bad. To I mean, मुझे भी लगा ही था कि there is a setup there. Not gonna lie. Come on. तो guys, कुछ थोड़े accounts ले ले, फिर ट्रेड में मिलता है तो लेते हैं. Alright guys, if you are in that trade, that's a break even. Oh, and I think you probably would have gotten, अभी नहीं मिला है. 58 अगर तुमने 67 66 पॉइंट का ऐसा लगा होगा, you still got a little bit 10 points to go, 10-15 points. And अगर तुमने IFPG का SL दिया होता, which is like right thing to do, you are almost about to get out. So that is that. Continuation by SL के पीछे का logic, there is no logic, it's just that I placed SL there. There is not logic for everything in this market, guys. It's just that I feel like it's my SL is safer there. There is, I mean, I can make up any logic right there. Why ये था वो था, but there is not really one. Yeah, chill out, boys. Thinking too much. Tick, 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 tick. Motor, if you want to trade like what I
trade, I guess best way to do is like go to ICT's channel, watch his content first. Inner Circle Trader नाम का बंदा है. Watch his content, and once you are done with his content, I guess then you can look around for different stuff. Okay, first focus on his content. Okay guys, we have taken out the main high which was marked on my chart. Wow. Hello. Where is my chart, guys? Where the fuck this go? Hello. Huh? What? अग्रेशन के साथ इन्वर्टन किया है. मुझे मेरा अकाउंट चाहिए गाइस, प्लीज. ETH है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स ही होते हैं. रेगुलर इज लाइक इट्स गोना कट यू ऑफ. इट्स गोना. भाई ये झूठा ही कर दी मार्केट ने. मेरा नुकसान करवा दिया. I'm gonna start building my position guys in the eval. Okay, don't do this. Evaluation है. Okay, again this inversion with ES confirmation did work out if anybody took it. Okay, I was late as usual, है ना. सो रहा था क्योंकि after taking out this liquidity market did swept it. So again that was nice of market to do it. News है 5 minute में. Yes, be very careful guys. 4 minute there is a news. There is a news guys. There's gonna be a call out for the news. Be very careful. I'm gonna stop my put my stop to break even guys. I'm gonna put my stop to break even and see if I can milk a little bit more. Come on, thoda sa और. 55. Give me 55. Give me 55. Give me 55. Give me 55. Again, another try. No, fuck no. It's not doing. Okay, another try. 61, 60, 59, 64, 62. Again, piece of shit. Keep bouncing back. न्यूज़ के पहले तो निकलना पड़ेगा. Okay, 55. There it is. There it is guys. 55. Completely done and dusted. भाई इवाल्स में भाई मेरी लेट एंट्री. भाई मेरी एंट्री इस कैंडल पे हुई थी, इधर हुई थी. 1:1 तो लेना ही था. Come on यार, don't do that. भाई ये न्यूज़ बंद करो यार. हर दिन भाई हर दिन 8:30 को न्यूज़ होती है ना, वो बहुत झूठ ना बोलूँ ना मैं, तो इश्यू वही होता है. भाई your execution speed is crazy. Again, it's in my blood at this point. I have done this days and night. Guys, new wall is up $1,400. Ooh.
Evals are up. We up. देखो ना you placed market limit market. I always place market. Let's go Vivek. W. You can use red dot pay, which is not free. They're gonna charge $10 in the first, and then it's all right. आप बोलो और मार्केट मेकर नहीं सुनने वाले भाई, मेरा तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे. What contract do you use? MNQ, NQ, NQ, NQ. I was in with 2 NQ. एक जल्दी निकाल दिया एंड एक को थोड़ा लेट निकाला, वही चीज है. रेड डॉट पे वर्थ इट है भाई. मैं रेड डॉट पे ही यूज करता हूँ. उससे ही अभी अकाउंट परचेस किया है. मेरा कुछ है नहीं अफिलेशन है, बट मैं पोस्ट नहीं करता. बट रेड डॉट पे ही यूज करता हूँ. पिछले साल भी मैंने रेड डॉट पे यूज करा. देयर इज अ न्यूज गाइस इन 20 सेकंड. सो रिस्क ऑफ प्लीज गाइस, रिस्क ऑफ. What is your trading time according to IST 8 p.m. Yes, those are 150 Ks. Come on. इसलिए 2 मिनट डाले मैंने. वाह भाई गाइस, न्यूज़ रहना था. What's your strategy to pass full pot and pray? Nah, I'm just kidding. I try to risk little bit more. Just like in this trade, I risked with too many $2,000 on again 50K का stop and 2 minis. It's like $2,000. Fuck. So I risked half of my balance. And उससे भी कम बनाया कि आर तो मैं देखता ही भी नहीं हूँ. तो हाँ, अगर मुझे अच्छा ट्रेड मिले ऐसा कुछ तो मैं डाल दूंगा. हाउ मच डू यू रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रदर? अगर इसमें 50 पॉइंट का स्टॉप था. गाइस नाइट बॉट की बात सुन लो यार. नाइट बॉट की बात सुन लो. लाइक दबा दो. अब देखो, अगर तुम इन्वर्जन पे शॉर्ट, अगर एक बात सच है कि अगर जो डर रहा है ना एनक्यू के साथ ट्रेड करना, उसको कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए एनक्यू. अगर किसी ने इस इन्वर्जन को शॉर्ट मारा होता और वो स्टॉप आउट हुआ होता और उसने फिर इसमें डर के शॉर्ट नहीं मारा वापस, राइट? क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड है, ये तुम्हारा सेकंड ट्रेड है. 2 ट्राई तो हमें मानने ही है. एंड दैट इज वाई वी से ट्राई 2 टाइम्स, राइट? सेकंड ट्राई में तुम्हारा लॉस भी निकल जाता, प्रॉफिट भी निकल जाता, सब कुछ हो जाता. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट गाइस. दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट. We win some, we lose some. Just make sure you come out profitable in the end. Exiting limit भी मैं लिमिट लगा देता हूँ. Guys, I'm gonna make some, either I'm gonna lose this 1400 or I'm gonna make some money, okay? If we find next trade, we're gonna plan to do something crazy. We can go up till $3,500, okay? So we still have $2,000. If we, it's not like I'm forcing, but if we can find a trade, we're gonna do it. I took that boat but got out when loss recovered, didn't hold because of FX trading. Yes, that's a good decision, Vivek. That's a good decision. Would you please give me insight on whether I should trade fixed points in Lucid or should I keep that approach with FX only? Fixed points meaning? What do you mean by fixed point, Chuck? If you can explain me, let me know. I can help you. 2 मिनट्स के साथ थोड़ा कैलकुलेशन बोल्ड और कितने पॉइंट्स पे कितने ऐसे लाते हैं. 2 मिनट्स यूजुअली हर ट्रेड में नहीं जाता मैं, बट ये इवाल से तो आई एम गोना गो अग्रेसिव. और ऐसे लाता था $2,000 का, मैंने लिया टीपी $1,500 का, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आई एंड अप ग्रीन. दैट इज व्हाट इट मैटर्स. ईएस में अभी भी अपॉर्चुनिटी है गाइस. ईएस में अगर तुम देखो, वी आर
just inverting this 1 minute IFPG, so there is an opportunity in the US. Let's see if I can scalp this beast out. Okay, hard stop in place. Alright guys, this is almost break even निकाल देगा ये. Again, be very careful shorting at the middle of the range और lower quadrant में range में. Be very careful, right? अगर तुमने 2 ट्रेड ले लिए, खत्म करो. GG, well played. एक अकाउंट को इतना सारा लोड देने का कोई मतलब बनता नहीं है गाइस. फिर इसको उल्टी साइड इन्वर्जन दे दिया. Then I'm planning to go longs then. Can I get 2-minute chart? Let's see if we respect this or disrespect. Should be on the respect side, respect button. But if it's not, we're gonna get out of this short. Longs will work, I guess. Yes, anything can work. At this point, we are uncertain where market will go, guys. At this point, we are uncertain. Okay. But we are respecting that 2-minute FPG right now. So how far do you want to go? On X, your buyer is still redirecting to Vedicrat Discord. Yes, I know that. I hope I'm gonna update everything, guys. Do not worry. Okay, one I got out at one contract right there. I want another one out at the 57-55 area again. What is this? Right, 51. Okay, perfect. I'm getting 7 points before. Bad guys like Abhishek bhai. Average watching 100 bandwidth total. अरे यार वो तो भाई. Okay, I'm guys break even on this trend now, on this continuation short. Okay, if it wants to pop back, it can. I'm trailing my SL as well to the 77 now. Come on, don't. Yes, nice. I'm trailing my SL to 72. Come on, don't pop back up, you piece of shit. Tightening. Oh no, fucker is like. And I'm out on that. And it's gonna go after me. Wow, that is crazy stuff to do. All right, when I make $400, sometimes the fees are different per contract wise. Is $62, sometimes only $7. Again, it depends on what time are you trading, so slippage can be different as well. So fees are always gonna be constant in and out. So yeah, that's gonna buy 525k with your game on Monday. Try to pass them one by one. New session with strategy. I'm trading with this for 2 months. Risk is 250. Try to make $600 in 2 trades. Travel by best. आपने जो फिगर आउट किया है ना, that's a best thing to do. Okay, one by one. Always remember, 3 में से एक पास करने का ट्राई करो, तो 5 में से 2 हो गए. उन दोनों में से एक पे आउट लो. $1000 का, 1200 का, $1000 का ड्रॉ डाउन होगा, उस पर 2000 बना लो. $1000 का तुम पे आउट लोगे,
हम रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं कि हर अकाउंट से तो पे आउट नहीं आएगा, बट 5 में से एक में पे आउट आ गया, दैट मीन्स यू गोना डबल योर मनी. नाउ गेम स्टार्ट्स, यू कीप रिपीटिंग दैट सिस्टम. What who says that you cannot take second payout, right, from the old account, right? If you do that, that's you're doubling your money. That's the thing. Short logic is just continuation, Vivek. I do not look for the logic in the evaluation, but again, as you can see, yes, did inverted that. FPG मैंने वो कॉल आउट किया था कि yes इन्वर्ट कर रही है, तो yes अगर नीचे जा रही है तो I wanna get on ride with NQ when it's going down. So let's say this was the short. When I saw ES has inverted its 1 minute here, I shorted entry है 803. बहुत बहुत नीचे घुसा था मैं. अगेन स्टॉप तो 50 पॉइंट 50-60 पॉइंट का जो भी है इस ब्लॉक के ऊपर ही था. एंड आई गॉट आउट एट 50. व्हाट वाज द एग्जिट? 50 नहीं, 50 तो था ही थे. 60 64. That was it. Again, negative RR. I'm back on the negative RR, guys. लूसिड का पे आउट बैंक में कितना आता है? मैंने वेडनेसडे रिक्वेस्ट किया था, अप्रूव वेडनेसडे किया था उन लोगों ने, एंड फ्राइडे को आ गया. सॉरी, थर्सडे को आ गया था. नो, फ्राइडे को. आज सुबह आया. आज सुबह मैं भूल जाता हूँ गाइस. कैन यू शो योर एग्जीक्यूशंस? Yes, you can watch it. Watch my executions. Do you want to see my bank account as well? Yo, who was that guy? I can show you my PNL. The only thing you can see is my PNL. It's too much cringe now. Right now, it's too cringe at this point. Look at that exit, boys. Look at that exit. Why I got out at 64.75 and market has found from 59. Crazy. वन डे टू पास है? नहीं, वन डे टू पास नहीं है. 30% कंसिस्टेंसी है, 40%, बट 150 केस है. पता नहीं एक इवाल ट्वीच करके उन्होंने डॉलर पीएनएल दिखा क्यों नहीं रहा. दिखा तो रहा है, बट वो डिस्टेंस ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी ग्लिच मार रहा है वो. व्हाट ट्रेड कॉपियर डू यू यूज? इन बिल्ड. GCT, if you delete FOMO and revenge trading, what is the ceiling in this game of trading? I guess there is no ceiling if you can do that. Truly, there is no ceiling. If I delete over trading, FOMO, looking at other people's PNL, that happens to me as well. If I delete all those, I could have made, I guess, could have doubled my payouts. Like, let's say I'm at 36,000, I should have been at what? Not double, but 60, at least $60,000. But just because I'm looking at the people online, they're making shitload of money. People like Lento, those kind of people who are making millions and millions, and that's why I push myself to become not like them, but at least to see what I can do if I push myself. And yes, I have made sometimes shitload of money doing that, but again, most of the time I lose myself. So it's yes is a good guy as well. So it's way better that you do your thing, not fuck around. Guys, अगर ये invert होता है, I'm interested again. And I'm gonna be break even on this trade. Come on, baby boy. Give me
Give me my 63. Come on, baby boy. Give me my 63. Alright, guys. Got out at break even after it ran to 500. I'm gonna re-enter, fuck around, and find out. I have now quite enough buffer. I didn't do बकचोदी. कंसिस्टेंसी है तो एग्जिट करना पड़ेगा. एग्जिट तो करना पड़ेगा. आप बताए मुझे लास्ट के 500 चाहिए थे. साले ने दिए नहीं, वरना एक एग्जिट मार लेता मैं. Come on, give me a little bit more. I'm almost done. अब तो हार्ड ब्रेक इवन डालना पड़ेगा. Come on, one more flush taking out the previous. It's not gonna do it, is it? Guys, अगर इधर से flush नहीं होता, it's gonna be very hard for me to stay in this trade. I'm gonna be very careful of what I do at this point. Okay. 802 वापिस आया. मैं निकल जाऊंगा for sure. Come on, one more flush, baby boy, and we are done today. Oh my god, volatility guys, volatility. डर आ गया. मैं ट्रेल कर रहा हूँ 87 पे. I'm not gonna fuck around and find out. मैं ट्रेल कर रहा हूँ. मैं हैवी ट्रेल. Okay, I got out guys. Beautiful. A fool which is beauty. That was it trade. So yeah, मैं कहाँ पे था? मैं किसी को आंसर दे रहा था. मैं किसका आंसर दे रहा था guys? Oh my god, look at my wow. Wow. Oh, did people get scammed? No, they did not. Okay. Okay, they did not. मैं किसका आंसर देता? How much time does work market take to account to verify? Because it's showing it's still in review. I created it today. हो जाएगा रेक्स भाई, टेंशन मत लो, हो जाएगा. 4 से 5 दिन लगे पहला पे आउट आने में. मेरा तीसरा पे आउट जल्दी आ गया गाइस. मेरा तीसरा पे आउट बहुत जल्दी आ गया. 2 दिन में आ गया. लोग पूछते रहते हैं ईवाल्स में कैसे करते हो. ये रहा ईवाल का सीन गाइस. ये रहा ईवाल का सीन. Okay, I have done my part for today. Showed you how I trade in the funded account, showed you how I trade in the evaluation account. Just because of regulations, I cannot show you my executions on screen. Otherwise, मेरी watching 300 होती. लोग पागल हो जाते. मैं कैसे execute करता हूँ market को. But yeah, that's my plan. Inspired me to trade future. You guys are the most genuine. Thank you so much, Rahul. By you think can any Indian trader make affiliation? Yeah, definitely. But again, we have audience which I mean, again, obviously we cannot spend dollars like people who lives and earns in the dollar, right? So so spending gonna be less, so that, but we have a wider audience, like more audience, so that it is very possible. Thank you, Rex. Thank you. Mentorship in November batch. I took my first payout. Now it's time for me to be consistent. Let's go, Rex. Let's go. 3 Lucid funded का क्या हुआ? 3 Lucid funded का क्या हुआ? भाई ये पूछ के तो धोती खोल रहा है. ये नहीं पूछना था. मेंटरशिप कब शुरू होगी? मैं बता दूंगा अगर कोई प्लान है तो. मेरा अभी कोई प्लान नहीं है.
There is no plan for mentorship right now. I love you deal say huge respect for you teaching us. Cloudy, anything can I do? Anything that I can do for you guys. ये देख लिया, इसको रिमूव कर रहा हूँ। 3 लूसिड फंडेड का दिखाने वाला हूँ मैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ गाइस। ओके, जिसका भी क्वेश्चन था 3 लूसिड फंडेड, प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। Yeah, that's what I'm saying. They will not able to spend this much, but this is on 150k flex evals. No, this is on 150k flex funded account. तुम लोगों को पूरा स्टैट देखना है इस अकाउंट का, पूरा टोटल स्टैट। नो नॉट दैट, सॉरी। मैं साला दिखा नहीं सकता, मार लेंगे लोग मेरी अपना। So this is how stat look like guys, this is how it looks like. Okay, so Wednesday we started this account, made $2,500, then we made $4,500, then we flipped, then we flipped on 23rd, 26th, 27, we took payout on 28th morning, payout approve हुआ, उसके बाद हमने उसी दिन $2,300 बनाए, then next day we made $1,900, $2,000 गिन लो। On 30th we again back to flipping. We flipped on 30th, 2nd, 3rd. We took payout on 4th morning, alright, 4th of February. We made $3,000 that night. Flipped on the 5th, and 6th I just made $2,700 today on that account. Again, so totaling I have balance of $13,000 left after taking 2 payouts. So yeah, and now I'm gonna flip on Monday and Tuesday, hopefully take payout from this account, and yeah, do absolutely nothing after that. Buffer के बारे में बताना, how it works. Buffer is something that you wanna leave in the account to trade for next payout. See, if I see a trade, Kamath, I'm just gonna enter with 5. Let's say if it's 25k accounts, 2-3 micro से घुसो, अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट जाता है आप keep averaging, and once a small drop comes into the play, I'm gonna flip it. Generally that is how I flip. So in this 3 funded account I have balance of total $40,000 guys. I have balance of $40,000 from these two, these 3 account. मेरा खत्म हो गया गाइस, मेरा खत्म हो गया। आई एम नॉट लॉन्गिंग, आई एम नॉट शॉर्टिंग। आज का सीन खत्म हो गया। मैं $2,500 बना सकता था, ईवाल्स पे बना लिया। फंडेड अकाउंट में आई एम डन, लूसिड फ्लेक्स में आई एम डन, सो आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग। बट अगर किसी ने होशियारी दिखाई होती तो तुमको ये सेटअप दिख जाना चाहिए था। ईएस भी फॉलो थ्रू कर रहा था। अगर तुम स्मार्ट एस गाय हो, इसमें तो लिक्विडिटी स्वीप भी थी। देयर इज अ स्वीप,
inversion, long, stop below this. This is typical A plus setup, guys. This is typical A setup. Oh my god, it gave it 1:1 वाले को तो भाई मिला कि नहीं? होपफुली तुमने निकाल दिया होगा, अगर नहीं मिला फिर भी 56 पॉइंट, क्रेजी. But yeah, you got it, not got it, it's fine. See it but didn't execute it. It's fine, it's fine. No trades, Vivek bhai, that's all we need. I know you are stopping at 2 trades. It is very choppy right now. Lucid Flex में कौन सा platform you are using? Tradeify. Tanish, I'm using Tradeify. भाई ये लिया NQ पर? नहीं मैंने नहीं लिया. I'm done. बढ़िया है. अभिषेक भाई लेंटो 50-60 के मिनिमम एवरेज कैसे करता है? ही हैज बिगर अकाउंट्स. बिगर अकाउंट्स में ही बिल्ट इट फॉर श्योर. उसको मिले नहीं थे, वही चीज़ें बिल्ड करने पड़ते हैं. वो 50-60,000 70,000 $100,000 तक फिर तुम कर सकते हो. मैं भी 2-3 हज़ार डाउन से बना रहा हूँ ना. $3,500 $4,000. वही चीज़, अगर मेरे पास $200,000-300,000 के अकाउंट हो गए, शायद, मैं सच नहीं बता रहा, आई मीन 100% श्योर यू, बट शायद मैं कर पाता हूँ. हाउ मच यू रिस्क ऑन इवाल्स 50 के? आई टेंड टू रिस्क $600-700. लॉन्ग एंड डस्टेड वी, लेट्स गो क्रेजी. You have the potential, not only potential, I'm gonna do it future. Mark my words, I'm gonna do it. I'm gonna, again, for myself, okay? I'm not saying that I wanna beat somebody, but NQ, trade NQ. If SL is above 40 points, trade MNQ. Not 40, 35 points और 30 points से ज़्यादा SL है तो MNQ ट्रेड करो, 30 से कम है तो NQ ट्रेड करो. क्या मत भाई, हम कैसे बने सकते हैं मैक्स प्रॉफिट इन अ डे? ट्रेड करके, आई गेस. यस एस भाई, फॉर श्योर. Not really. I do not have any health issues, but okay, thank you. Maybe. Guide risk reward. Again, there is no such thing as risk reward. Other than there is only one risk, that you are buying $100 accounts and reward has to be more than $100. Just know that. Everything above that or below that is just a myth and lie. ईवल्स में कितना रिस्क करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, वो सब तो मैंने बता दिया है. तो वही चीज़ है, उस पर ज़्यादा बात करने की कोई चीज़ नहीं होती. ये ऐसी कैंडल है तुम्हें निकाल सकती है तुम्हारे लॉन्ग्स में से, बट तुम अगर 50-55 पॉइंट्स पे नहीं निकले इस हाई पे, तो इट्स वे बेटर यू होल्ड योर SL, राइट? अगर तुम्हें निकलना ही था तो उधर ही निकल जाते हैं and waiting for a drop like this. But again, you never know what's gonna happen, so it's alright. Even if you got out break even, it's alright. 500 पर 2K का रिस्क लो. कौन सा अकाउंट है जिसपे तू 2K का रिस्क लेगा आशु? अगर 150K का अकाउंट है देन 1500 रिस्क करो मैक्स, आई गेस. 100 पे भी इस ब्लैक नहीं, तब तो लॉन्ग का मैटर था ना, लाइट. जब तक जो इन्वर्ट हुई है उसका वेट करो. दिस वाज नॉट दैट फार अगेन, राइट? This could have been just a pullback. Yes, I know there is an inversion, but you cannot short that. No, Lucid, but what account size? What account size? Yes, you can pass in futures if you have 70% win ratio. 50 के Lucid funded stage पर कितना max risk लूँ? Like $450. So I guess that's a risk.
$450 to $500 if you are going very aggressively, and normally not very aggressive. And what about next bullish inversion? Again, we have swept the lows, so every bullish inversion is gonna help out. But I would rather ask you the question that why did you not take this inversion and this inversion, right? Again, this is very late in entry, and now we are just closing into 11, so there can be a choppiness coming in after pumping and dumping. So it's way better to avoid that. It can work out is properly better, I guess. It's setup, there is a setup on this long, right? But again, 450 per trade or per day. Again, if you are planning to take 2 trades, split it between 2. $600 risk लो और इन 50 के 300 split कर दो. बाय बाय, मंडे मिलते हैं. ऑलराइट, फिक्स है. बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यस, वहीं किया है. लॉन्ग बनेगा ना एनक्यू. अगर लॉन्ग करना था तो तुम इधर कर सकते थे. नाउ लीव इट. Anything can happen in these FPGs. We can come back down. Yo, Maddis, what's up? अगर मैं ऐसे बैठ के सो जाऊँ तो गाइस तुम्हें पता चलेगा, और फिर ऐसे ही रैंडमली आंसर देते रहो देखे बिना. हाँ हाँ भाई, रिस्क करो, $600 रिस्क करो. किसी ने तो पूछा ही होगा सवाल. नहीं नहीं भाई, वो नहीं करना है. हाँ हाँ, करना है. नहीं दिख रहा ना ध्रुव भाई. सो जाता हूँ आधे घंटे के लिए, बीच बीच में बोलता रहूँगा. हाँ भाई, 50 के पे 700 रिस्क कर लो नींद में. लेट्स गो. यस डैडी, क्रेजी. सो जाओ भाई. Sir, if I only take recent clear high and low taken out, IFPG entered. Yeah, it is enough motor. You do not need to take every trade that I take, because again I am experienced guy. So if you wanted to take trades जो liquidity sweep वाले थे आज, तो एक ये बनता था ओपन पे, एक ये liquidity sweep पे बनता था, ये भी बनता था इधर. But again, if you are waiting for just highs and lows which are very clear, so this was that. ये मत लो क्योंकि ये लो नहीं निकला है. So you can do that. Cap कहाँ से? It was gifted by none other than Srini in the chat. Made around $800. Good day. Yes, true, right. Beautiful. 25K Lucid में $250 to $300 in the both stage, I guess. Just look at the, try to forward as much as possible. That's how I would say. Nothing extra, nothing fancy. I'm so fucking tired. Red Bull भी काम नहीं कर दिया आज. By the way guys, तुमने रील देखी इंस्टा पे? रील देखी इंस्टा पे? नहीं देखी, जाके देख के आओ. गेम क्राफ्ट ट्रेड्स सर्च मारो. चलो. यस, डब्ल्यू रील क्रेजी वन वायरल भी हो गई. यस यस. There is no reason we should not have taken it. It is valid trade, true भाई. But you should ask the question to yourself while taking that trade. अगर मैं इतना ही bullish था, why did I not take the entry here and then taking the worst entry here in the fund? In eval you can do anything, okay? If it's your evaluation stage, you can long this any day of the day, right? But again, if it's funded account, you need to be very serious when you are trading the sweep of liquidity inversion. So better off
ये है कि तुम ये लॉन्ग करो, अगर ये मिस आउट कर दिया, इस पे हेजिटेट कर रहे थे तुम, तो फिर लो ही मत, छोड़ दो फिर। डोंट यू थिंक उदय नाउ लुक्स अ बिट लाइक टीजीआर सॉ हिज लेटेस्ट हेयर कट? उदय इज इन टीजीआर आई गेस, टीजीआर फेज। इंस्टा लिंक भेज दो, गेम क्राफ्ट ट्रेड सर्च मार दो, यही रवि तेज भाई, वन एंड ओनली इंस्टाग्राम पे, टेंशन मत लो, और कोई नहीं होगा, विद द ब्लू टिक, गेम क्राफ्ट ट्रेड्स। हाउ टू बाय फ्यूचर prop account? If you have a debit card which has international mode or credit card, go to description link में, there is a 2 link, sign up on their website and then buy account, easy. Pratik, you maybe you don't have data. Made around $920 from 1 hour IT at shorts in evals. Crazy yaar, Suryas. 2 years. Crazy W. भाई आप अपना क्रेडिट कार्ड शेयर कर दो। हाँ कर देता हूँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं लाइट भाई। बेस्ट अकाउंट, माय रिकमेंडेशन गोना बी फ्लेक्स अकाउंट, 25K 50K लूसिड के राइट नाउ, नथिंग कैन बीट इन दिस इंडस्ट्री, फ्यूचर्स इंडस्ट्री में। हाउ मच मैक्सिमम we can take in payouts from Lucid in sim funded stage? Somewhere close to $100,000, so you don't need to worry about that. But let's do the quick math. I think 6 पे आउट पे वो लाइव शिफ्ट करते हैं। अगर 5 अकाउंट है तुम्हारे पास, अगर तुम मैक्स पे आउट 2000 का लेते हो हर बार, सो 60,000 $65,000, और लेट्स से इन बीच में तुमने ब्लो कर दिया है, वो सब गिना 30-40 वो ऐड कर लो, तो वही चीज़ है। डेबिट शेयर कर दो उससे, वो तो पापा ने ले लिया लाइट भाई, पापा मारते हैं अगर मैं मारता हूँ तो। You need to either purchase a data from TradingView, or you can purchase a account of any future firm and then connect it on the TradingView to get the data. Hello Gucci Uchiha, welcome to the stream. I'm new to future, confusion about the contracts. I bought 50K Lucid, confusion about in which contract should I open the trade. Just search NQH26. Okay, NQH26. मैं एक बार मैंने वो क्लोज कर दिया साला, रुको, ट्रेडवेट में क्या लिख के आता है मैं सर्च मार देता हूँ। ओके, एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, टेंशन न करो। ये सारे क्वेश्चन तुम डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड में तुम्हें स्क्रीनशॉट के साथ आ जाएगा कौन सा खोलना है कौन सा नहीं। एक्सप्लेनेशन डिस्कॉर्ड दबाओ, उसमें ज्वाइन करो एंड पूछ लो, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें लाइव आंसर मिल जाएंगे। 6 महीने में जॉब छोड़ने का रोड मैप बताओ। डोंट लुक एट दैट वे, जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन द मार्केट। NQH6, okay, to answer that guy, NQH6, okay. Again, yes, keep that in plan that you want to leave your job soon, but don't keep it a single goal. वो वाला चीज़ है। अगेन, if you are planning to just be consistent in payouts, if you already have payouts, there is a chance that you can leave your job in 6 months, but I think the best thing to do overall जो मैं बता सकता हूँ कि if you can take out 3 month consistent, let's say $4,000 or $5,000 payouts every month, then you can think about that. Also have a saving of 1 year, so let's say if you are earning 50K a month from your job, at least get 1 year worth of salary, so you have backup everything, you don't walk around. Okay, इमरजेंसी फंड अलग बात कर रहा हूँ। ओके, सो वो है।
Again, I'm not financial advisor at all. Okay, explanation mark, not a financial advisor. Can you please explain how to register in work market? Have you reached to the payout, Satish? If you reach to the payout, Lucid will send you the invitation. Or will tell you to sign up, and only after that you sign up for it. Okay. तो स्टूडेंट 208X1A4 आपको सर्च मारना है NQH6 ट्रेडोवेट में. ओके ब्रो, कैन यू शेयर द टेम्पलेट्स? एवरीथिंग इज कमिंग आदित्य. टेम्पलेट्स, वीडियोस, वेबसाइट, एवरीथिंग इज कमिंग गाइस. एवरीथिंग इज इन द पाइपलाइन. Again, I'm working on it. Cool. I'm gonna die any moment, guys. I'm gonna go to sleep at any moment. तो जाओ भाई, लॉन्ग रेस्ट कर लो. रेस्ट का तो क्या है, अभी एक शादी से आ रहा हूँ. कल भी जाना है, परसों भी जाना है. 3 दिन बैक टू बैक वही चीज़ है. आई हैव लूसिड फ्लेक्स, तो वही चीज़ है, इसीलिए थका हूँ. वरना आई एम ऑलवेज वेल रेस्टेड. But thank you. I'm gonna go in 5-10 minutes. So yeah, I have Lucid Flex 25k eval account connected. Trading view still 5 second. 5 second lag आएगा निखिल. 5 second lag will always be there. So that is. Don't purchase trading view premium. तुम्हें चाहिए नहीं वो, तो चिल मारो. इतना पैसा वेस्ट मत करो उसमें. ट्रेडोवेट में तुम सारी सेटिंग कलर वलर चेंज कर सकते हो, कर लो. ड्राइंग जो करनी है तुम वो ट्रेडिंग व्यू पे कर देना. तो वही चीज़ है. ब्रो, आई परचेज 50k अकाउंट. हाउ मच कॉन्ट्रैक्ट टू स्टिक ऑन टू पास? सी, मेरा जो प्लानिंग होता है टैनी भाई, दैट इज़ माई प्लान. ओके, अगर तुम रिस्क ऑफ करना चाहते हो तो तुम वो कम कर लेना अपने हिसाब से. माई प्लान इज़, जब भी 35 पॉइंट से बड़ा एसएल होता है तो मैं 5 माइक्रो लगा देता हूँ. उससे कम होता है मैं 1 मिनी लगाता हूँ. दैट्स माई प्लान. ओके. पॉसिबल शॉर्ट ऑन द इन्वर्जन? नो, नो शॉर्ट्स. ट्रेडोवेट पे एसएल कैसे लगाया? जस्ट ऐसे स्क्रीन पे क्लिक करो, वहाँ पे आ जाता है लिमिट और स्टॉप. स्टॉप वाला सिलेक्ट कर लो. थैंक यू रवि तेजा भाई, अप्रिशिएट दैट. नून भाई क्या पूछा भाई? भाई अभी वाला एनक्यू ट्रेड जो नहीं लेने बोला वो मार्क करो ना एक बार चार्ट पे. कौन सा मैंने बोला नहीं लेने का नून भाई? शॉर्ट लॉन्ग ये वाला बोल रहे हो क्या? मैंने ये नहीं बोला तुम नहीं ले सकते. तुम ले सकते हो डेफिनेटली, बट मैं फंडेड अकाउंट्स पे वो लॉन्ग नहीं मारूंगा. Probably, I'm not saying, but just because I got 1, probably 2, 3, 4, 5 setups, right? I'm not gonna go into that. एंट्री तुम्हारी होती इन्वर्जन पे, स्टॉप होता तुम्हारा इधर और इधर. 1:1 मिल गया तुम्हें उसमें भी. वही चीज़ है, मिलने के लिए तो कभी भी मिल जाएगा. I help, okay, help. I was profitable on gold, so I bought 5% of icon, then I passed it, took one payout, plus I only reached 0.5, so I thought I'm profitable, so I took 100k, not able to pass. Uh, Again, when you switch accounts from 5k to 100k, it's always gonna be tough. Motor again, but it's alright. You gotta have that experience, you gotta get that experience of 100k accounts. It's always कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना बड़े अकाउंट्स की, तो इट्स फाइन. अभी तुम टफ लग रहा है, तुम ढूंढोगे खुद से क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं. व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू डोंट वांट टू डू.
in the 100k accounts. You will find out your way. Do not worry about, do not stress about it. Again, on the side, just buy another 5k accounts and try to get payout on that. Focus on that. Do not focus more on the 100k account. Just try to figure out stuff on the 100k accounts while you are trading with your 5k usually, because you are able to take payout on that. So that do that. I entered 1:2 टारगेट था है. ओके 1:2 टारगेट है. होपफुली हो जाए. जस्ट मेक श्योर इधर से रिएक्शन ना आ जाए. लूसिड में गलती से रिदमिक ले लिया. कैन यू हेल्प मी आउट टॉकिंग टू लूसिड? इट्स वेरी हार्ड आ रहा. इट्स वेरी हार्ड टू डू एनीथिंग. बट अगेन इफ आई एम गोना आस्क देम इफ दे कैन स्विच, एंड वंस दे डू आई एम गोना लेट आई एम गोना डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर लेना. मैं अनाउंस कर दूंगा किसी को ये करना है. बट आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू डू इट. रिदमिक में कौन टावर है, डाउनलोड कर लो. इजी, मैंने वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो डाल के रखा है. ओके चैनल पे वो देख लो कौन टावर कैसे ज्वाइन करना है. लास्ट स्ट्रीम पर 5 ट्रेड 5 विन पा. आई मीन एक दो एसएल भी लगा होगा. बट हाँ, आई हैव सिस्टम विथ 45% 1:1. व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर मी? सेम रिस्क आई गेस. 45% विन रेशियो है तो रिस्क थोड़ा कम कर दो. अकाउंट लो थोड़ा कम होगा. कौन टावर बेटर है क्या? कौन टावर इज ऑल राइट. इट्स ऑल राइट. इट्स बेटर देन. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पीपल व्हाट दे वांट टू यूज, बट यू विल लाइक इट. वो टीपी खींच के डालने वाला है. यू विल लाइक इट. प्रोजेक्ट एक्स के जैसा है थोड़ा थोड़ा. हेलो, यू डोंट ट्रेड ऑन कॉल? नॉट राइट नाउ. नॉट राइट नाउ. नॉट इन न्यू सेशन. Tradeovate is always best because it's easy to set up. Hello Pratik. Yes. Alright guys, I'm gonna sign off. Okay, Lucid is as usual 40% off. If you ever wanna buy accounts, use code game. There is a link in the description. Hopefully whenever you are buying accounts, I'm not forcing. Again, I cannot force, but whenever you are buying accounts, use code game. Not that you should buy accounts or not, I'm not here to suggest, but I'm using those accounts. I'm taking payouts. Again, I do not get any privileges. It's the same thing. Every rule applies to me as well, but it is just a good firm right now, so we're gonna use it as much as possible. We're gonna milk that firm as much as possible until they go out of the business. All right. I think probably 15th of February के बाद Chris, you're gonna see a lots of content coming in. All right. Thank you guys for joining. W audience, we're gonna do a small giveaway on Monday. Okay, be there. I'll see you guys. Thank you for joining. W, hopefully you learned something from today. That is why I'm here, not just to give you trades, not to show you off. That's what I make. But done guys. All right, thank you guys. ओके नहीं बताऊंगा सेंसे भाई, टेंशन मत लो. I'll see you guys. Peace. Take care. Have a good weekend. Bye bye. Gamecraft Trade signing off. Love you all.